हमको भेज दिया। लाइट मेरे बंद रहेगा ना, तो शायद मुझे श्रेया बोले फिर तब लाइट में चलाते हैं मेरा मृदु अरे ऐसा सीखने वाला हाँ हेलो हेलो I would request the people at the back to please come forward. Ultimate human. आयुष जाओ नीचे खाना लोग कौन सा बाइक स्टार्ट करा दे पैराग्राफ कहीं हेलो हेलो वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसमे गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। A very warm good evening to all the dignitaries and individuals present here. I, Shreya, along with Shal, welcome all of you to the opening night, Shab-E-Bahar of ROSTRA'24.
the greatest celebration of literature that has inked a magnificent legacy of love, light, and togetherness over the years. कल्पना कीजिए, भोर की आभा आपके घर के गमले पे लगे सफेद गुलाब के फूल पर पड़े ओस की बूंदों ये बातें कर रही है, या एक सुकूनमय दोपहर घर पर विश्राम करते हुए आप माँ के हाथों से बना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, या आप अपने प्रिय मित्र संग एक संध्या बीआईटी भ्रमण पर निकले हैं, या किसी शांतिपूर्ण रात में आकाश के तारों की गिनती कर रहे हैं। इसी प्रकार का ठहराव, इत्मीनान, सुख और शांति सम्मिलित हैं साहित्य में, या यूं कहूं तो भीड़ में, व्यस्तता में सुकून हेतु साहित्य अनिवार्य है। Tonight, as we transcend the ordinary, let words weave melodies and the world's pirate on the stage of our hearts. Let us begin our escapade to the hallowed halls of literature, where the world is seen in a grain of sand and infinity is held in the palm of our hands. Without further ado, I would like to invite on stage Dr. Sanjay Kumar, HOD of the Electronics and Communication Engineering Department, Dr. Neeraj Kumar Singh, Faculty Advisor of the Literary Society, and Dr. Piyush Tiwari, Director of BIT Jaipur Campus, for lightning of lamp. I would also like to request Dr. Sparsh Anand, President of Literary Society, to join us on stage. Thank you, sir. I would request the dignitaries to commence the occasion by enlightening with a few words of encouragement. थैंक यू। आदरणीय पीयूष तिवारी सर, नीरज जी, सारे विद्यार्थी, आपका कार्यक्रम अभी मुझे पता चला है कि रामायण का मंचन करने जा रहे हैं, तो आपके कार्यक्रम की शुरुआत यथाशीघ्र हो। मैं बस 2-4 शब्द बोलना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। लेकिन आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि 2 चीजें हैं, एक लिटरेरी सोसाइटी है, एक हिंदी सेल है। तो हम सभी एक बार ताली बजाना चाहते हैं। हिंदी सेल की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं हमारे बीच, पीयूष तिवारी सर हैं, इन्होंने हिंदी सेल की स्थापना की है।
और नीरज जी के बारे में तो कल भी मैंने कहा था, मैं हमेशा कहता हूँ वो एक बड़े ही सुकोमल हृदय के, कवि हृदय के व्यक्ति हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके दिमाग में टेक्नोलॉजी का लेवल भी बहुत हाई है। दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण भविष्य में एक बहुत बड़ी चीज़ को परिणाम देगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, रामायण के बारे में मैं बस 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ। अभी सारे संस्थानों में AICT की तरफ से कंपल्सरी किया गया है कि आपको बच्चों को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू 2 नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ाना है। इसकी आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि ऐसा लगा कि शायद मानवीय मूल्यों में बड़ी गिरावट आई है पिछले कुछ सालों में, उसे ऊपर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान सब कुछ सीख जाए लेकिन इंसानियत की वैल्यू यदि नहीं समझता है तो बड़ी मुश्किल होती है। और यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का मतलब तो यही है ना कि वैसे मानवीय मूल्य जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। पूरी दुनिया में अगर आप सर्च करेंगे, कोई ऐसा साहित्य, कोई ऐसी पुस्तक, कोई ऐसा प्रामाणिक साहित्यिक ग्रंथ जो मानवीय मूल्यों का उससे बड़ा सागर और कोई हो ही नहीं सकता है, वो रामायण है। और आपको पता होगा कि रामायण कम से कम 300 तरीके से लिखा गया है, 300 भाषाओं में हमारे सामने उपलब्ध है। और 2 रामायण से हम बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, एक वाल्मीकि रामायण से और एक रामचरितमानस से। लेकिन यदि आप रामायण की गहराइयों में उतरेंगे तो मुझे लगता है कि मानवीय मूल्य क्या है ये समझने के लिए आपको दुनिया की किसी भी दूसरी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, मैंने कहा था हिंदी सेल है, उसकी आवश्यकता है क्योंकि आज पूरी दुनिया में हिंदी बोले जाने वाले लोगों की संख्या 3रे स्थान पे है, कभी 4थे स्थान पे थी। ठीक है, यदि आप भारत में देखेंगे तो भारत में हिंदी बोलने वालों, हिंदी बोलने समझने वालों की संख्या लगभग 60% है। ये बात तो है, स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन एक आवश्यक बात हमें समझना ये जरूरी है। जैसे कोई भी देश अपनी किसी एक भाषा के नाम पे पहचाना जाता है। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मन वहां की भाषा है, अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रेंच वहां की भाषा है। इसी प्रकार आवश्यकता है भारत के अस्तित्व को एक समुचित पहचान देने के लिए दुनिया में कि एक भाषा भारत का प्रतिनिधित्व करे। और ये आज से नहीं, आजादी के बहुत समय पहले से इस चीज को महसूस किया गया था कि सिर्फ हिंदी और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर स्थापित करने में सहयोग कर सकता है। दूसरी कोई भी हमारी भारतीय भाषा का स्तर उतना ऊंचा इस दृष्टिकोण से नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे वो कोई भी भाषा हमारी हो, हर एक भाषा में संस्कृति के उत्थान और पतन की कहानी है। हर एक भाषा ऐसी चीजों से गुजर कर निकली है जिसने मानवता के विकास में सहायता दी है। हर एक भाषा का महत्व उतना ही है जितना हिंदी का है। और जैसे मैं कल एक बात मैंने कही थी, उसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हमारे पास जनसंख्या तो खूब है, लेकिन जनसंख्या को जनशक्ति में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने भाषाओं का विकास करें। और इस दृष्टिकोण से लिटरेरी सोसाइटी की भूमिका बहुत बहुत बड़ी है, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी बड़ी है। क्योंकि भारत को यदि हम शक्तिशाली देखना चाहते हैं तो भारत के कोने कोने में जो लोग हैं उन्हें उनकी भाषा के साथ जोड़ करके उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ भाषा का विकास ही कर सकता है। इस दृष्टिकोण से लिटरेरी सोसाइटी की भूमिका वाकई में बहुत बड़ी है। अंतिम वाक्य मैं कहना चाहता हूँ आज का, वो ये है कि अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक बन सका सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा में पाई थी। आप समझ सकते हैं मातृभाषा में पढ़ा हुआ व्यक्ति इतना बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। और आज बच्चों के सामने जो समस्या है वो ये है कि वो इस चीज से जूझते रहते हैं कि किसी बात को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाए, कैसे व्यक्त किया जाए। उसके पीछे की जो अवधारणा है उस पर समय देने का समय मिलता नहीं है लोगों को। एक बड़ी समस्या है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट में जितने प्रकार के भी काम क्रियाकलाप होते हैं, लिटरेरी सोसाइटी के द्वारा किया जाने वाला काम मेरे हृदय को सबसे करीब है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Your words have instilled in us a wave of enthusiasm, and we are indeed honored by your esteemed presence. तो चलिए संध्या का आरंभ करते हैं। कल्पना कीजिए कि कल प्रातः काल सूर्य की पहली किरण फूटते साथ ही आपका राज्याभिषेक होने वाला है। संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल है। नगर जन आकुल हैं आपको भूपति के रूप में देखने को। राजभवन के समक्ष बड़े बड़े भूपति से लेकर शूद्र पशु तक
आपकी एक झलक को प्रतीक्षारत हैं। पर उससे पूर्व आपके पिता आपके समक्ष आते हैं और आपको आदेश देते हैं कि अगले 14 वर्ष तुम वन में काटोगे और एक वनवासी की भांति जीवन व्यापन करोगे। राज्य की सेना आपके पक्ष में है। जनगण आपके निर्देश पर बिन विचारे ब्रह्मा के सम्मुख खड़े हो जाएंगे और आप स्वयं इतने सशक्त हैं कि सारे बंधन तोड़ स्वयं को राजा घोषित कर दें। पर सकल ब्रह्मांड का संपूर्ण बल होने के बावजूद आपने चयन किया पिता की आज्ञा का पालन करना, माता के विचारों का मान रखना और निकल पड़े 14 वर्ष के वनवास के लिए। इतनी शक्ति है कि बल नहीं अपितु मर्यादा आपके कर्मों की दिशा निर्धारित करे। क्या इतनी भक्ति है कि भक्त के जूठे बेर खा ले? या इतने विनीत हैं आप कि हरि अवतार होने के बावजूद वानर सेना से मदद की गुहार लगाएं? या इतने धर्मव्रत कि पिनाक भंजन के पश्चात परशुराम की कटुवाणी को मौन धारण किए सुने? अगर हां तो आप राम हैं। अपितु हर वो मनु जो सदैव न्याय और सत्य के पक्ष में रहता है, मर्यादा का पालन करता है, धर्म की महत्ता समझता है और प्रेम के प्रत्यक्ष दंडवत रहता है, वो राम है। द लिटरेरी सोसाइटी आपके सम्मुख प्रस्तुत है रामचरितमानस के बालखंड का धनुष भंजन प्रसंग लेकर। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वां दिन। ऐसे ही एक निश्चित समय अमूमन 18 लाख वर्षों पूर्व गठित अमर गाथा का एक अनूठा और दिव्य पात्र इतना जीवंत हुआ कि उसकी महिमा और आकर्षण, उसका तेज और तर्पण, उसका यौवन और बल, उसका पुरुषार्थ सजीव मूर्त बल मस्तिष्क में गड़ा ही नहीं अपितु वक्ष मध्य उर बनकर जीवन दायिनी बन चला है। हे सूत्रधार, ऐसा कौन वीर है जो इतने वर्षों में स्मृतियों से ओझल होने के विपरीत जनमानस के जीवन ढर्रे का दीप बन पड़ा है, जिसकी शौर्य गाथाएं इतनी दिव्य हैं? कौन शूर ऐसा है जो शोक मोह से डिगा नहीं? कौन है वो बलशाली, वो आदर्श योद्धा? कई बार एक सही समय पर पूछा गया प्रश्न वर्षों के अविद्या के अंधकार को हर लेता है। अज्ञानता की पट्टी कैसी उतारी जाए यदि प्रश्न ही न किया जाए? नटी कौन है वो जो रचता है ये संसार? अपने युद्ध का रचयिता कौन है? वह अपने सुख दुख की प्रत्यंचा चढ़ाने वाला कौन है? वे तो राम है। राम ही है वे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी अमिट गाथाएं हैं वह भूली छवि एक दृष्टि से मोहित कर देती हैं। आज हम सब रसिक उन्हीं के अलौकिक प्रसंग का विलोकन करेंगे। श्री राम मुनि विश्वामित्र संग महाराजा जनक के दरबार आ पहुंचे हैं। सिया सुकुमारी के स्वयंवर की तैयारी है। मन में मिले जुले भाव प्रकट हो रहे हैं। ज्ञान से चेतना आती है और यदि ज्ञान के साथ भक्ति हो तो मुक्ति आती है। महाराजा जनक पधारने वाले हैं। चलो नटी, ज्ञान और भक्ति का आनंद लेते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।
अब बंदी जन जनक बोलाए, मेरी लावली कहत चली आए। मिथिला नरेश महाराज विदेहराज जनक की जय। सुने सुने सुने, विशिष्ट और साधारण सब सुने। अब हम महाराज की आज्ञा से उनके प्रण की घोषणा करेंगे। यह सर्वविदित है कि मिथिला की राजकुमारी श्री जनक नंदिनी सीता के विवाह की एक ही शर्त है। जो वीर प्रतापी राजपुरुष भगवान शंकर के इस विश्वविख्यात धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी भंजना करेगा, राजकुमारी जानकी उसे ही अपने वर के रूप में वरण करेंगी। सुने सुने सुने। इसमें क्या बड़ी बात, अभी इस पर चार पढ़ाता हूं। शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करनी, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जानी, भूप सहस्र बसे नहीं बारा, लगे उठावन ठरही न ठारा, लगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। बस बहुत हुआ। यह मैं क्या देख रहा हूँ? देश देशांतर से राजा महाराजा सुर असुर सब स्वयंवर में पधारे हैं, पर किसी में भी वह बाहुबल, यश व कीर्ति नहीं जो मेरे प्रण की लाज रख सके। धनुष पर चाप चढ़ाना तो दूर, कोई से तिल भर के लिए हिला भी न सका। अब तो यह धरती वीर विहीन जान पड़ती है। अगर मैं जानता कि दृश्य कुछ ऐसा होगा, ऐसा प्रण ही ना धरता। सभी अपने अपने स्थान को लौट जाएं। सीता का विवाह विधि में निहित ही नहीं लगता। अब और कोई उपाय नहीं, राजकुमारी कुंवारी ही रह जाएगी। बस महाराज, रघुवंशियों में जहां कोई भी एक उपस्थित हो, वहां ऐसी कायरता भरी बातें नहीं की जाती। और यहाँ तो स्वयं रघुकुलमणि श्री राम बैठे हैं। सुनिए महाराज, सकल स्वभाव से कहता हूँ, आपकी इच्छा हो तो समस्त ब्रह्मांड को गेंद सा उठाकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दूं। ऐसे में इस धनुष की महिमा क्या है, इस पर तो यूं ही चाप चढ़ाकर 100 योजन दौड़ जाऊं। मैं शपथ लेता हूं, यदि ऐसा ना कर पाया तो आजीवन धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण। जाओ राम, महाराज जनक के संकट का निवारण करो। सुनि गुरु वचन चरण सिरहावा, हर्ष विषाद न कछु रहा, ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, तब निज बांध राज लजाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। जो हमारे हितु कहलाते हैं, वे आज भी मौन बैठे हैं। कोई महाराज को उचित शिक्षा क्यों नहीं देता? सब हमारी जग हसाई कराने को तुले हैं।
जिस धनुष को रावण ने छुआ तक नहीं, जिस पर प्रयास करके बड़े बड़े भूपति हार गए, उसे क्या कोई राजकुंवर उठा लेगा? रानी, तेजवंत को लघु न मानिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोगे सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन संभागा। देवी, संशय त्याग दीजिए, राम अवश्य ही धनुष का भंजन करेंगे। सखी से आश्वस्त होकर रानी का सारा अवसाद मिट जाता है और उनका हृदय श्री राम की आभा के अधीन हो जाता है। उसी क्षण श्री राम की नजर सीता पर पड़ती है, जिनकी अकुलाहट हर बीतते क्षण के साथ गहराती जा रही है। तब राम ही बिलों की बैदेही, तब राम ही बिलों की बैदेही, सभय हृदय बिनवती जीते, सभय हृदय बिनवती जीते। मन ही मन मनाओ कुलाली, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपिन सेवकाई, करिहित हरहु चाप धरुआई। गणनायक बलिदायक देवा, आज लगे कीन्ही तुम सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, कदम चाप दुर्दाति डोरी। हे शिव, हे भवानी, आज तक की सारी सेवा का फल दे। एक ही विनती है, मेरे प्रभु के हित में चाप की गुरुता हर ले। यह पिताजी ने कैसा हाथ ठान रखा है, उन्हें लाभ हानि का तो कोई स्मरण ही नहीं रहा। भय से कोई मंत्री भी उचित सलाह नहीं देता। विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। शिशिर के फूल कभी हीरे को भेज सकते हैं भला? इस कठोर धनुष के सामने इन कोमल चिंत किशोर की कोई समानता ही नहीं। हे विधाता, अब तो धीरज धरे भी नहीं बनता। हे शिव धनुष, मेरी विनती मान ले, अपनी जड़ता लोगों पर डालकर मेरे प्रभु के अनुकूल जाए। सीता जी के मनोभावों को उनके मुख ने दबा रखा है। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर भी वह प्रकट नहीं होती। नैनों का पानी अब वहीं कहीं कोरों में सूख गया है। तनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोने मिलई न कछु संदेहु। लक्ष्मण श्री राम को धनुष की ओर देखते पाते हैं और पुलकित तन मन के साथ अपने चरणों तले ब्रह्मांड को दबा कर कहते हैं, दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु नरनि धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, ओहु सजग सुनी आय सुमोरा। श्री राम सभा में उपस्थित लोगों की ओर देखते हैं।
जो उन्हें मूर्तिवत दिखाई पड़ रहे हैं। तत्पश्चात श्री राम सीता की ओर देखते हैं, जिनके लिए एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यह जानकर करुणा निधान श्री राम गुरु को मन में प्रणाम करते हैं और इसी क्षण धनुष उठा लेते हैं। श्री राम जी धनुष को हाथ लगाते हैं, तब बिजली की एक चकाचौंध होती है। उस चकाचौंध के अंतर्गत ही श्री राम धनुष उठाते हैं, चाप चढ़ाते हैं और तोड़ देते हैं। बाबा लिखते हैं, लेके चढ़ावत के छतगाढ़, काहू न लखा दे कि सब ठारे, काहू न लखा दे कि सब ठारे, काहू न लखा दे कि सब ठारे, काहू न लखा दे कि सब ठारे। घोर कठोर रब रवि बाजित जिमार बुचल, चित्तर ही दिग्गज ढोल महियहि तोल, पूरब कलमल सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारन ओ दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारन जयति वचन उचारन। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम चरित पावन, मधुर सरस अति मन भावन, कोनि कोनि गीत में सुने सुनाए, गीत की प्यास बुझत न बुझाए। राम सिया राम, जय जय 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 राम सिया बोल सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सिया राम मैं सह जब जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस अद्भुत प्रस्तुति को देखकर मानस की चंद पंक्तियों में होता है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोत ही मिलहि न कछु संदेहु। अर्थात राम और सिया की भांति कठिनाइयों का सुमेरु पार कर जिसको जिस चीज से सच्चा प्रेम है, उसे वह चीज अवश्य मिल जाती है। Love. It is a complex emotion. The more eager we are for love, the more oblivious we become to its repercussions. Our next performance narrates the tale of a heart that loved too well, yet lost its pieces in the deep, dark voids of reality, searching for a home that never was. With this, let's welcome Priyanka Di with her composition.
I would like to extend my warmest greetings to everyone present here. So, I have the unfortunate habit of turning my sadness into content. Not the happiness, it's not nearly as entertaining. So, this is the result of one such excursion, I might say. Sometimes I wonder, is this why you warned me, Mother? Is this why you made me so cautious about falling in love? Did you know that it would end up consuming me, eating me alive from inside out until I had no soul left in me? Did you know that it would make me so completely dependent, so brave yet so helpless? Did you know that it would tether my mind until all I had left was a shell of a heart? I'm sorry, Mother. Sorry that I couldn't follow your words. Sorry as I hiccup and hitch my way through the call and you keep mum knowing just what has happened to your only daughter. I was enough, selfish enough, careful enough to lock myself away from everything I knew was happened. Sorry for letting gain strong over my sins. For I knew I failed myself the moment I did even. I'm sorry I couldn't protect myself from someone who didn't even know me, Ma. Someone who never bothered to look past my shiny wrapper. Someone who took my hurt for arrogance, my withdrawal for selfishness, my loudness for aggression. I'm sorry I wasn't able to realize that people don't ever have complete faith in me, not in the way you do. I didn't realize that I would have to prove my intentions, my faith, my loyalty to every actor on this stage. That your sheer, quiet belief in me is but a rarity, a luxury perhaps offered only on a limited basis. I think I finally know, Mother. I think I needed to be burnt to be afraid of fire, and yet how is it that I cannot stop myself from reaching out to the flame? Did you go through this too? Did you go through all the joy and the happiness and the butterflies and the roses, and then the quiet rebukes and sharp taunts and knife wounds that blossomed like bouquets? Is this how you have been living? Screaming inside out until your throat is raw and you can taste metal on your tongue, only to realize that you're screaming into ears that are blocked by the inherent sense of superior justice so prevalent in those we have chosen to love. Ma, I am exhausted after 2 days. Have you truly gone through 2 decades of this? Is there really no way out of it? Are we truly so doomed in matters of the heart? I'm sorry, Ma, for falling in love. Thank you. The heart, so eager for love, is sometimes blind to the shadows that foretell its own doom. Indeed, it was a phenomenal performance and made us really question the ideals of love and the values of life. प्रेम भाषाबद्ध नहीं है, वह स्वयं में संवाद की भाषा है। प्रेम की भाषा दो हृदयों के एक सुर में धड़कने की भाषा है। प्रेम की भाषा स्पर्श की भाषा है। प्रेम की भाषा स्मरण की भाषा है। प्रेम की भाषा समर्पण की भाषा है। प्रेम की भाषा समादर की भाषा है। प्रेम एक स्पंदनात्मक संवाद का माध्यम है जो हृदय की गहराइयों से उजागर हो मानस की अनुभूति को व्यक्त करता है। इस अनुभूति का ज्ञात कराने द्विभाषिक काव्य प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं आयुष और मौली।
संसार में प्रेम संभव नहीं। जो तरंगें तैरती हैं भीतर मेरे तुम्हारे, उन तरंगों को ये समाज नहीं सह पाएगा। तुमने कहा था हमारा प्रेम दैव्य है, पर इन लोगों को दैव्य भाव मिथक लगता है। प्रेम का ताजमहल अब पड़ गया है पीला। प्रेम के राम सेतु पर उठ रहे हैं राजनैतिक सवाल। प्रिय, अब प्रेम नामक भाव मरने लगा है। मैं लगा हूं इस दिव्य भाव को शब्दों के सहारे जिंदा रखने की। इस भाव को स्याह में बदलकर तुम्हें लिखते हुए ख्याल आता है कि चले जाएं हम एक आध दशक पीछे किसी हिंदी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की तरह। किसी सड़कों पर चलते रहें और दोनों की तरंगें एक ही धुन में गाए। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नज़र में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ दे। On crossroads on a rainy day, tides with us. We face strangers, thoughtless souls, and unfeeling hearts. But oh love, of course, this has to begin like a movie. In the dark with a white screen and a single source of light. Life in love would start vicariously. I'd open my eyes and all would be born again. Like loving a thunderbird. All of Satan's men and seraphims exit, and all would fall dead as I close my lids. With life comprising of 7 stages, love, I guess, happens at 2.5. We tread on parallel lines with our wild hearts in a cage, and everyone assumes that this entire dance is just surface chemistry happening on superficial glass. We are treading on thin ice and being drenched in the cold fires that leave our hearts frozen in place. And as you'd beg to get a glimpse of my heart to see if it can reflect yours, I'd cowardly threaten you to look away. For I truly believe that our hearts are disgusting creatures filled with the glitter from our desires and the dirt of our sins. But they are wishfully assumed to be made up of glass, material that can be crushed so easily. But can we really assume that tools of love are made up of material so fragile? हृदय का मृदुल होना मनुष्य शरीर की सबसे सुंदर परिकल्पना है। मैं सोचता हूँ अगर हिया कोमल न होता तो शायद संसार में चिट्ठियाँ नहीं बनी होती, नहीं होती ये प्रेम साहित्य की किताबें, नहीं रोता कोई परदेसी बच्चों के घरों पर बारूद बरसने पर। मेरे हिसाब से ईश्वर एक कठोर हृदय वाली शक्ति थी जिसने मृत्यु जैसे कठिन भाव बनाए, दुख बनाया, अश्रु बनाए, और जब ईश्वर का हृदय मृदुल हुआ तो उसने पुष्प बनाए, मृग बनाए, मोर बनाए, उसने तुम्हें बनाया प्रिय। तुम्हारा हमारा मिलना संभव हुआ क्योंकि संसार में कोई एक ऐसी शक्ति थी जिसका हृदय मृदुल था। है स्मरण मुझे हमारी पहली चाय, बसंत की जाती हुई ठंड, हल्की बारिश, मानो किसी ने इस संसार को एक गीत में पिरो दिया हो। एक धुन में खौलती चाय, उसी धुन में मेरे कांपते हाथ, हल्की बारिश में खेलते बच्चे और पास मुस्कुराती उनकी माँ। उस दिन उनकी माँ ने उन्हें भीगने से नहीं रोका क्योंकि शायद प्रेम और आज़ादी एक दूसरे के पूरक हैं। मैं अब नहीं पूछता तुम्हारे कॉलेज क्लासेस की बातें, तुम अब नहीं पूछती मेरे फ़ोन का पासवर्ड, वो माँ नहीं पूछती अपने बच्चों को अंदर आने को। और उस दिन उस भैया ने भी नहीं पूछा कि चाय में अदरक होगी या नहीं, क्योंकि प्रेम आज़ादी देता है बारिश की चाय में बिना पूछे अदरक घोलने की।
And well, you'd remember my passwords for me as I'd remind you of birthdays. You'd make fun of the way I laugh and complain how I deliberately walk on dried leaves for the crinkle. As you'd fail to differentiate between cookies and biscuits and continue to judge me for liking the icing on cupcakes. And you'd come up with something cliche yet different about the sun, stars and moon, even if Orion is the only constellation you can identify. On the first date, you classified coffee as overrated. And the matter was swiftly swept under the doormat. For coffee was a conveniently good first date idea for dates that were yearned to be forgotten. Would we be so mundane like an afterthought that comes after the midsummer night dream? Like the first whiff of spring that one would miss on a late January evening? For otherwise, it would be right to be chastised for looking for real romance. But then again, I believe you probably don't spare 1/10 of your mind on me. And I've been placing you above all my midnight muses all this while. And what is it with you blatantly laying down your flaws in riddles? Does the madness and depth scare you? शब्दों को अधरों पर रखकर मन के राज न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। So, it seems it's like in the words of Mary Oliver. You don't want to lose a single thread from this intricate brocade of happiness. So if it's your words that set in stone all of this that seems so fragile, like a daydream that I feel might break if I breathe too much, then please do put forth your words in front of me, even if they might seem foreign to me at times. For I so terribly, tremendously, drastically and devastatingly carry the bloodline of women that have put their love out there for the world to see. And I'd express all of this, fearing nostalgia of this present becoming the past, pretending that all of this that we weave with tenderness cannot be tangled up or ripped apart into nothingness. But I truly believe that all of this is enchanting enough to move me to bleed ink on paper. That love in itself can move an artist to get lost in the acrylic and charcoal and the recklessness that follows. मौन को सदैव मृत्यु से भापा गया है। परिंदों का मौन बताता है कि काट दिए हैं मनुज ने पेड़ सारे, मौन मृत्यु है। अखबारों का मौन बताता है मार दिया है मनुज ने सत्य को, मौन मृत्यु है। पर प्रिय, मौन जो मेरे तुम्हारे अंतर्गत है वो विश्व का सबसे जीवित भाव है। तुम कहती हो कि तुम्हें मेरी खामोशी खलती है, तुम कहती हो नहीं पसंद तुम्हें मेरा चुप रहना, तुम कहती हो तुम कहते रहती हो और मैं मूढ़ मौन। पर इस मूढ़ का ये सोचना है कि जिस प्रेम की नींव संगीत हो, साहित्य हो, उस प्रेम को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। खामोशी प्रेम की भाषा है जिसका इजहार आंखों से होता है। प्रेम है भाषा चेहरे की, तुम चेहरे से इजहार करो, जुल्फों से तुम हाँ बोलो और आंखों से इनकार करो। जब प्रेम उमड़ आए ज्यादा तो काजल करना नैनों पे, और रूठो जब बस चुप रहना, मैं गीत कहूँगा रैनों पे। नजरों की रहजानी कर यूं ऐसे ना शर्माना तुम, और दो पल देखूं जब तुमको बस पलकें ना झपकाना तुम। नीली बिंदी माथे पर और शब्दों का श्रृंगार करो, प्रेम है भाषा चेहरे की, तुम चेहरे से इजहार करो। So we have walked under different skies, and you have tolerated all of my whims despite me hating them. I have stayed in denial and tossed my heart into flames, and at the same time embraced the delicateness with which I love. Embraced the way you like orchestras and are intimidated by operas, the calluses on your fingers that you hide in your pockets, and the way tea inspires you to go back to the first book you ever read. प्रेम था मेरे अंतर मन में किताबों के बदौलत। Do you know that why in India people do not do the fan? गजलों के बदौलत। पर जिस प्रेम भाव को मैंने तुमसे जाना, वो प्रेम किसी किताबों में नहीं, किन्हीं गजलों में नहीं।
तुम सही थी कि प्रेम हमारा दिव्य है। तुम सही थी कि हम अनंत आशियानों के चलते हुए भी हम एक राह पर मिलेंगे। तुम हमेशा सही कहती थी। यह दिव्य भाव मैंने तुमसे सीखा है। And through these years, as you started drinking coffee and I started sipping tea every time we were away, as I remembered my own passwords and reset them, and you forgot all birthdays and anniversaries, we somehow met once again at the crossroads. The confusion prevailed, but the silence was a comfortable one. And the boredom that came after. I feel I fell in love with you even before I met you. For when I thought that love wouldn't look for me, I realized that love comes back to where it began. Love would be delicate yet infinite. Love would be sipping tea on rainy days and drinking coffee on spontaneous dates. Love wouldn't be all about daydreams, but it would be reckless. And we'd walk this boredom together for the rest of our lives. So, I'd like to conclude with the words of Miss Emily Bronte. She says, and I quote, "He is more than myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same. My great thought in living is himself. If all else perished and he remained, I should still continue to be. And if all else remained and he were annihilated, the universe would turn to a mighty stranger. I should not seem to be a part of it." जनाब आमिर खुसरो लिखते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी इसकी धार, जो उतरे सो डूब जाए, जो डूबे सो पार। Indeed, the light of love subdues the darkness of unsolicited fears and the gloom of the agitated mind. Again, I'd like to thank the both of you for embroidering the brocade of a wholesome journey with this beautiful bilingual rendition. Let verses be our guide, leading us through the landscapes of emotion as we embark on a journey of introspection, empathy, and understanding with our next performance. Let's welcome Priyanka Di once again. Good evening again. So this piece was something I wrote last year for Women's Day, but with this year's Women's Day around the corner, I thought that this deserved to be recited in the way that it was written. "What were you wearing?" they asked. Cameras flashing in my face and lights shining so brightly that all I can see are dark spots. "Dear," I smiled my way through the answer. "Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton." The replies change, yet somehow remain the same. Brand names and money etched onto cloth draped around a person and walked down a runway. Yards of crystals and glitz and glamour, dazzling to the eye and sparkling like a million tiny galaxies, have been condensed to the shape of my body. Clothes that smell like diamonds and taste like Romane Conti and feel like they belong to someone else. Clothes that somehow, somewhere, made someone feel like they could pay a fortune to own them. I cannot complain because these pieces of cloth put the zeros in my bank account. I cannot complain as these pieces of cloth and these flashing cameras and ecstatic smiles that make my cheeks ache get me the attention I crave, the connections I need, the subtle touches and polite hugs and overflowing compliments and drunk toasts. Because somehow, somewhere, someone decided that stitching a word onto a piece of cloth made it privileged and made the world around it a land of fantasy. "What were you wearing?" they asked. Faces solemn, expectant.
waiting to pass such judgment on something they didn't see. I look in their eyes and swallow my rage, bite down on my lip and clench my jaw. Stop myself from asking why it matters. Jeans and a shirt, I answer, while the echoes of all such answers given in times past, present and future ring in my ears. My school uniform, a frock, my burqa and hijab, a bikini, a suit. Just cloth wrapped around a person going about their everyday life. Clothes that smell like home and taste like bread and butter and feel like they belong to us, only to be burnt due to the memories they now carry. Clothes that somehow, somewhere made someone feel like they had the right to destroy us. I cannot complain because my screams will be chalked up to hysteria. I cannot complain as these pieces of cloth are taken as my entire identity and used as a way to justify the violation I've gone through. Because if I'm dressing like that, then I'm asking for it. Because somehow, somewhere, someone decided a school uniform was an invitation and a 5-year-old was too weak to resist, too naive to protest, too small to defend herself. What were you wearing? They ask. Clothes, I say, to 1,000,000 mics and 1,000,000 cameras and 1,000,000 viewers, smiling and laughing and blushing and bowing, clamoring for the fame and applause and glory that can be wrung from the red carpet. Clothes, I say, to the police and the judge and the newspapers and the viewers, angry and sad and vengeful and proud, awaiting a fate that was decided before my reply. Thank you. This poem indeed offers a truly raw perspective from a woman's point of view. Through verses, it explores the complexities of personal experience and challenges societal misconceptions. Now, when literature taps along the beats of music, melodies twirl with the waves of unkempt emotions to adorn the evening with pearls of lyricism, soothing harmonies, welcome artists of an performance.
Check. 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 Feeling my way through the dark. Again. Check. Hello. Check. 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 Just say I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye.
I'll thank my lucky stars for that night. Hello everyone, I'm Praharsh. सबसे पहले तो a very warm welcome to each one of you present here. It's lovely to see such a lovely crowd turning up. So this is the opening night of ROSTRA'24 and I thought कि आप सभी के साथ मिलकर लिटरेचर और संगीत को बांधने वाली वो डोर जिसे हम लिरिक्स कहते हैं उस पर थोड़ा गौर फरमाएं. So the first song is something I absolutely personally relate to. In a nutshell, this is what I'd say to my someone special, I guess. Thanks for stealing my words, Phillips, but it's fine, you can do so. You're a great artist. So the song is Gone, Gone, Gone by Phillips. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. This one's beautiful, like think of a person whom you love so much that you'll go to the lengths of doing whatever it takes to make them feel safe. Lying, cheating are essentially selfish attributes. Things you do for yourself that are meant for you, जब आप वो किसी और के लिए करते हैं तो think how special that person needs to be for you, right? And with that, the next lyrics goes like, when enemies are at your door, I'll carry you away from more if you need help, if you need help. Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you, baby. I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I'll love you long after you're gone, and long after you're gone, gone, gone. In this theater of life, your adversaries have a knock at your door. I'll be there to answer them for you. Matlab, they're going to be at a war and I'll fight the war for you if you want. Makes sense के time में जब exams and assignments are around the corner, तब तुम्हें अपने topper friends को तो याद आता ही होगा, सभी को आता है क्या नहीं? Can we hear some noise? Alright. Well, the exams are the adversaries and your topper friend is like your guardian. Okay. Following that, it's written, your hope delicately hangs in the balance. I'll intertwine my destiny with your sufferings and take it all in myself to restore your well-being. But in between these beautiful poetic pacts, there lies a strong trust. Even if time concludes ki haan, this is it for you guys, we'll keep our promise of love beyond that. Basically, their commitment transcends the present. Kind of like BIT and Baker's Fresh, हर फेस्ट में आ जाते हैं आप लोग. Good cheesecakes though, right? Good cheesecakes. You fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender. You've always done the same for me, so I would do it for you, baby. I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I'll love you long after you're gone, and long after you're gone. Imagine the first time तुम्हारा दोस्त मैगी बनाता है, considering कि उसने कभी पानी भी नहीं उबाला है, but ठीक है, it's a humongous task for him, but let's just consider.
before the pani overflows, you get there like a guardian angel with a chammach and a kettle and you save the day. This part conveys a readiness to assist, especially during times of need. कईयों को तो जब 3 बजे रात में वॉशरूम जाना हो तब सारी दोस्ती यारी याद आती है, राइट? You're my backbone, you're my cornerstone, you're the crutch when my legs stop moving. You're my head's torch, you're my rugged heart, you're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating. For you, baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. Backbone, rugged heart, crutches. I mean, this is the essence and absolute beauty of literature, ना? कहने के लिए तो straight forward भी बोल सकते हैं ना? Dude, you mean a lot to me. But एक गजल लिख के तो देखो, एक स्वरचित कविता सुना के तो देखो एक दूसरे को, उसका पता चलेगा. Essentially, I found a profound dependence on you. Self-explanatory है. You're my motivation and inspiration, and you're one of the key reasons for me to get going. The repetition, like a drum, baby, don't stop beating, is absolutely beautiful. In the symphony of my life, you're the drum beat that my backbone dances to the tune of. I like a drum, baby, don't stop beating, echoes like a percussive anthem. Your heartbeat harmonizes with mine, and whenever you need me, I'll be for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I'll love you long after you're gone, and long after you're gone. All right. Thanks a lot, Sumit. Thanks everyone. That was Gone by Phillips. An absolute banger of a song. But the next song is probably something I'm sure a lot of you might have heard of. Probably something oxymoron. Alright, well, this song explores the complexities of long distance relationships. And you guys can tag along in this one if you guys know this. Whatever. ये बातें वही फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, न जाने अब मिलेंगे हम तो रुक जाओ पल यहाँ पे. There's nothing new to this, even if we are meeting after so long. वही किस्से, वही कहानियाँ, and पता नहीं अब आगे मिले या ना मिले, अभी इस क्षण में है, इस पल में है, तो रुक जाओ मेरे साथ ही. Alright, you can spend some time with me. नर्म चादरों की सिलवटें तुझे अभी बुला रही हैं, न जाओ दूर इनसे ये कहीं ये सुकून कहाँ पे है हासिल दिल को मेरे. पता कि मीलों का ये फासला है, अलग आसमां भी है, तो क्या ये दिल न माने. Nirm Chadre is a metaphor for the shared intimacy, the moments fostered together. And Anup की आकांक्षाएं देखिए, to almost some extent उसकी selfishness कह सकते हैं इसे, not in a negative connotation, ठीक है? He says, where's the tranquility there जहाँ पे तुम हो, the place that you're at. So just stay with me ना, मेरे सब कुछ मिलेगा. It's all in the place, and I'm here. And Anup certainly realizes that the expanse is so vast, it cannot be ignored. But he still has that defiance against the logical acceptance of the distance. So what if the distance is so big? So what even if the skies above us are separate? ये दिल ना माने.
ये गाड़ियों की ऐसी दौड़ साथ तेरा दिल दौड़ता है हाँ जा रहे हो दूर तुम तो क्या मैं ही तो दिल का मुसाफिर तो एक बार फिर हंस के जरा देख ले मेरी इन आँखों में मैं कैद कर लूं हर वो पल तेरा तेरी ये बातें जो क्यों अब दिन ये ढलता नहीं ना हो तो इतनी inspirational हो तुम कि तुम्हारा दिल and your desires feel like a car. I know you want to go big in life, travel, explore, but like stay here and look at my eyes. You'll know all I want is to explore your heart. You're so important. The day just doesn't seem to pass without you. तुम मुड़े जा रहे ये आसमां में खिड़कियों से देख तू पहाड़ों को ये छोटे से लगे कितने बड़े जो सामने दूर जो है खड़े फिर ये हमारी जिंदगी गोलियों सी छोटी छोटी सी लगे कितनी बड़ी नहीं जानते खाली घर तेरा ये चाबियों की गूंज ऐसे तुझे डरा रही तू डरना नहीं मैं हूँ यहीं पर 1 2 3 4 अब अलग आसमां है और है ज़मीन भी कुछ अलग सी पर मिलोगे जब कभी देखना तभी मैं कुछ अलग नहीं Thank you for this incredible response. Now, before we go get into something that might interest you all, I'm pretty sure it will. But before we get into that, I just want to acknowledge what a lovely audience you guys have been. Can we have some claps for you guys? Well, the last song for tonight that we would want to cover will be a song which is from my favorite artist and probably all of our favorite artists as well. Like Latisha here is like an absolutely no-no when it comes to EDMs, but even she can't resist it when the dude starts playing. Avicii is no more with us today, but his songs reminds us of him every single day. The music he created will last forever. The impact his songs create are here to stay. So this is The Nights by Avicii. Once upon a younger year, when all shadows disappeared and I came out free. When face to face with all our fears, learn our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father. Before that, tape recounts his childhood. Shadows disappearing and animals inside coming out to play. ये basically उसके carefree childhood को signify करता है. We went face to face with our challenges, tackled them head on, and made unforgettable memories. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, you're wild how to live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me
guys, is a discussion between a father and a son, where he is imparting valuable life lessons to his kiddos. I'm pretty sure, sir, you guys will be able to relate this as well. Well, don't let these precious moments slip away. You're wild and free, his father says. Don't let yourself get deterred. अपने challenges को head on face करो and keep moving ahead in life. He foretells a future where the kiddo will leave this world behind. His world will be the memories he made, the challenges he faced. These are the nights that never die. These signify the everlasting impact of the memories he fostered, and he urges his son to draw strength from his words in times of crisis. When thunderclouds are pouring down, light a fire they can't put out. Carve your names into those shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. Thunderclouds are the challenges, and look at the beauty in such Goliath adversaries. He's asking his son to face the challenges with grit and determination. Light a fire they can't put out. They say water quenches the flame, right? Well, you better set your heart ablaze in a manner that not even the gods themselves can move you from what you targeted. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me na 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 na. Oh, 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 oh. These are the nights that never die. My father told me. Can we have a big round of applause for some of the best musicians in this campus? We got Lara and Aisha on the acoustic. We got the amazing Ramendra on the cajon. Literature, music, that's beautiful. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Thanks so much. Thanks so much. Alright. Thanks a lot, guys. Thanks a lot. So, before we just take exit. I think a lot of you guys might be fan of retro songs, right? The old 80s, 90s, 50s, 60s songs. So we don't really have. मेरा जूनियर है आयुष, इज अ K22. वो कहता है वक्त का तकाजा है, तो वो भी अभी है बेसिकली. तो कुछ थोड़ा जल्दी से इसको एक मेडली में वी कैन डू दैट लतीशा. हम लोग इसको एक मेडली में ये करते हैं. एंड लेट्स लिसन टू सम ऑफ द सॉन्ग्स दैट विल टेक यू गाइस डाउन टू योर मेमोरी लेन्स. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. है दिल मुझे बता दे किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर आंखों पे छा गया है. दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर आंखों पे छा गया है. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. हमने तो प्यार की अपना नाम कर लिया, प्यार की
राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ख्वाब तुम या कोई हकीकत कौन तुम बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो और कई बार जाओ, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के सराहने लिए है अपना दिल ना जाने किस पे आएगा, है अपना दिल वो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा, बहुत भोला है बेचारा, ना जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। क्या हुआ कसम वो इरादा, भूलेगा जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कावरियों का दिल मचले, कावरियों का दिल मचले मेरी। शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो, सर तेरा चकराए आ जाए, आजा प्यारे का सहारे, काहे घबराए, काहे घबराए, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई।